Spiti, the land of llamas. The beauty of Spiti lies in its harsh, untouched terrain and simple living. Far from modern civilization, bordered on all sides by the snow-clad mountains, secluded, unhindered with its shamanic rituals, tenets of Buddhism, and symmetrical villages against pink-jagged mountainscapes, surely there couldn't exist such a spiritually electric place as Spiti. In spite of its incomparable beauty, Spiti has its own fair share of challenges. The Spiti Valley is a remote land, hence the hardships like isolation, extreme weather conditions, sub-zero temperatures in winter, and inaccessible roads make it hard for this valley to be a constant part of the world. But today, we won't talk about how heavenly the Spiti Valley is, nor about the hardships of the valley. Today, let's talk about the children of this valley. Their little school in the middle of sand-carved rocks, and the education which is not just limited to course and syllabus. Let's talk about Munsel-ling, a home school in the heart of Spiti Valley. Munsel-ling, a Boti word meaning light piercing into the darkness, that His Holiness 14th Dalai Lama carefully chose for the school in 1996. Before we further talk about the journey of Munsel-ling School, let's embark upon the journey of a Lama. A Lama born in 1964 at Morang village of Upper Spiti. The little Lama entered Key Monastery at an early age. His spiritual endeavors took him to Dharamshala. After completing his advanced studies in Buddhist philosophy, Ven.Tashi Namgyal, the young Lama, had two choices: either to live an austere life of a monk deeply devoted to Buddhist spirituality, or to dedicate his life for a cause. And the cause he chose was to go back home and surrender his life for his people, for little hopes of this valley. The year was 1993. Along with his colleagues, Venerable Lamaji Tashi Namgyal founded Rinchen Zangpo Society for Spiti Development. Years of hard work and dedication made Munsel-ling a walking reality in the year 1996 with just one dream, one kid, and one classroom, which in a span of a decade emerged as one of the biggest residential school in the most tribal belt of the state of Himachal Pradesh, and today accommodates around 500 kids not just from Spiti but also from the nearby tribal valleys. स्कूल को हमें ये सोचते हैं, वी थिंकिंग अपना रिकॉग्निशन ऑफ द वैली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. हमारे जो एरिया का पहले when we started before, हमारे टू नेबर्स है जो लाहौर के नॉर बहुत आगे पहुंचा. हम स्पीति वाले को बहुत एक शायद इंटरली वो थोड़ा सा लो उससे भी देखते हैं. आज हमारे बच्चे काफ़ी पहुंच गया है. तो अपना कल्चर को साथ ले जाना, मॉडर्न एजुकेशन को, फिर जॉब को, ये प्रिजर्वेशन, एक वेल पीसफुल सोसाइटी जो चलाना हमारा ये लक्ष्य है. इस पर हम Munsel-ling isn't just a school. It is a cultural institution that's not only providing a modern education to the young minds, but also keeping the traditional values of Spitian culture alive, making these children take immense pride in their rich heritage. हमारा स्कूल तो कल्चर और हेरिटेज के ऊपर, मुझे लगता है स्पीति में ऐसा स्कूल होगा पहला कि वही कल्चर और हेरिटेज दोनों के ऊपर काम कर रहा है. बच्चों को पता होना चाहिए अपना कल्चर क्या होता है, कैसे होता है. अदरवाइज तो दे डोंट नो ना सर. उन्हें तो बिल्कुल नहीं पता कि कल्चर क्या है.
प्रिजर्व होना चाहिए बस। अगर आधे तक करेंगे या इसके बाद प्रैक्टिस नहीं होगी तो आगे का पीछे का क्या है पता नहीं चलेगा। As we all are Buddhist, it is very important to learn Poti language. Actually, it is our main language. Heritage हो चाहे culture हो, उसे alive रखने के लिए language is the best one. And कल्चर में जैसे हमारे स्पीतियन, हमारे जो गाने हैं, सॉन्ग्स हैं, हम लोगों के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। जो हमारे बहुत पुराने बुजुर्ग हैं जो 70s 80s वाले हैं, उनसे हम कलेक्शन करते हैं कौन कौन से सॉन्ग है, कैसे है, कौन से स्टेप्स है, कौन से गाने में कैसे स्टेप्स करते हैं। तो उसके बाद हम बच्चों को यहाँ पर सिखाने की कोशिश करते हैं। कल्चर के लिए एक तो डांस हो गया, फिर एक तो है हमारा मेन होता है कि लोगों को दया भाव हमारे में सबसे होता है, यही होता है सबसे पहली चीज़ की हमारे में दया भाव। दलाई लामा जी बोलते हैं, उसी हिसाब से हम उनको वैसी शिक्षा देते हैं बच्चों को। School gives special attention to performing arts as it is a vital part of their culture. From performing traditional dance forms, singing folk songs, to enacting skits and dramas representing local folk tales and folklores. Most buildings on the campus are variations of traditional Spitian methods, with earthen walls and flat earth-covered roofs. The hostels are also made with the same traditional architectural methods and have solar space heating features to take advantage of Spiti's bright and abundant sunshine. The school is affiliated by Central Board of Secondary Education and trying its best to provide young minds with modern amenities like library, science labs and healthcare center. Kids get their exposure vastly from the volunteers coming not only from India but across the world. I'm a graduate student and I'm here to do a project with the school on indigenous ecological knowledge and how to incorporate knowledge holders into the school so that the children can be connected to their community members and knowledge is not lost along generations. Spiti is rich in resources, and so knowing about your environment helps you be sovereign as a community. So it's important to learn about your environment. We are very happy, that volunteers coming different fields, they're getting the different exposure for the students. Yeah. तो अब वॉलंटियर जो है वो भी सोचते हैं कि भाई ऐसी कौन सी जगह, इंटीरियर जगह हो जहाँ हम बच्चों को कुछ सिखा सके, कुछ दे सके, कुछ उनके लिए अच्छा कर सके। तो मुझे लगता है वो सर्च करते हैं, फिर उनको पता लगता है कि भाई यहाँ पे एक स्कूल है जहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ है और बहुत इंटीरियर में है। तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे हम बच्चों को अपनी अच्छी से अच्छी सेवा दे सके और फिर वॉलंटियर यहाँ पे बढ़ते रहते हैं। Sending kids hundreds of kilometers far from the valley for education wasn't just tough for local Spitians, but was almost impossible when the weather is extreme and face sub-zero temperatures. Therefore, Munsel-ling gave home to kids of many such families. The doors of Munsel-ling are open for the kids from the age as little as 4 to young mature adults. Warmth of tandoor in cold winters becomes equivalent to the warmth of hearts of teachers and caretakers of the school. Teachers who are tirelessly dedicated and solely devoted to one mission, one cause, and that is empowering the valley with education. I think the biggest challenge for them is the climate only, during the winter time especially. But there is sometimes sudden change in the weather, so that is becoming a kind of the big challenge for them. कि वेदर यहाँ पे एटलीस्ट 8 months आउट ऑफ 12 months बिल्कुल ठंड रहती है। तो 4 months आप देख सकते हैं, अभी भी जुलाई का महीना शुरू हो गया, लेकिन ये पिछले 2-3 दिन से अभी हमने जैकेट्स और स्वेटर्स उतारी हैं, अदरवाइज तो हम जैकेट्स में फुल पैक थे। तो वो ये एक कंडीशन है। एक थोड़ा सा वाटर प्रॉब्लम भी रहता है विंटर में, क्योंकि यहाँ पे तो कंडीशन बहुत हार्श भी है, ठीक है, डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे हर चीज़ डिफ़िकल्ट है। मतलब कोई भी आपको जैसे मतलब स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ सोर्स कलेक्ट करना हो वो भी मुश्किल है।
तो मीन्स मतलब ये ज़्यादा हार्ड कंडीशन में मतलब खुद को ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ के बच्चों को, आई थिंक। प्रॉब्लम तो विंटर्स को ही होती है, समर्स को तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। विंटर्स को पानी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, पानी जम जाते हैं, नहीं पी पाते हैं, गर्म पानी कभी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हार्डशिप्स तो हैं, आपको खुद पता है यहाँ पर। जैसे कि अभी हम लोग मटेरियल जैसे कि अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट्स बीन लाइक 15 to 20 days, बट वी आर नॉट एबल टू गेट द मटेरियल्स राइट। जबकि अगर मैं दिल्ली में होता तो अभी शाम को मैं गया मैं मटेरियल लेके आ जाऊँगा। तो कुछ जगह दिक्कतें हैं, तो वही सारी दिक्कतें हैं जैसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे उठे हुए फैमिली अकेले नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक स्ट्रेंथ ऐसे भी है जिनके पास स्पॉन्सर भी है, तो कुछ बहुत ही गरीब घर से भी है। और जहाँ तक आप और स्कूल की बात कर रहे हैं कि भाई आप लोग हेल्प कर पाते हैं कुछ भी है, तो सर हेल्प तो हम खुद औरों से हेल्प लेते हैं। वॉलंटियर्स आगे, कोई हम स्पॉन्सर देखते हैं, इनको आगे पढ़ाई के लिए हम आगे इनिशिएटिव करें। तो और स्कूल्स को तो सर हम इतना नहीं कर पाते, लेकिन जहाँ तक हमारे यहाँ पे गरीब पेरेंट्स आते हैं, जब रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम 100% हम अपना ये देना चाहते हैं कि भाई उनको हम स्पॉन्सर ढूंढ पाए और हमारे स्कूल में उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके। हमें सौभाग्य कि हमें वी हैव टू फेस दैट चैलेंज। इजी में तो कोई भी काम कर सकते हैं, तो जो काम को चैलेंज take the challenge is good for us, yeah. Some of the parents from low-income houses by no means can afford the full cost of their children's education, and therefore Munsel-ling has sponsored 50 such children from the most disadvantaged backgrounds. This is a very mix of, I can say, financially management system. Little bit the school management, school parents association through little contribution getting from parents also. Then we getting from the government of India little bit grant aid also. That also the what should say the increasing money and the expenditure higher is big difference. बहुत ही challenge है. Then we very luckily from we have some sponsorship scheme also. तो हम सारे को मिक्स करके फिर अदर वे वी खान पे टू मच फॉर हायर सैलरी ऑल्सो, बच्चों को भी खाना पेट भर के देते हैं, बट इतना वो फ्रूट एंड द मिनी नॉन वेज वी कैन प्रोवाइड एट द मोमेंट मिल्क एंड जो हमें देना चाहिए था दे नहीं पा रहे। टीचर्स को भी इतना सैलरी जैसा होना चाहिए, दे हार्ड वर्किंग दे डिजर्विंग, बट इतना हम दे नहीं पाते। तो स्टिल द मोटिवेशनल इज वर्किंग बिहाइंड। With the generosity and charities from around the world, the school has extended 3 academic and a kindergarten wing. School heavily relies on charitable contributions and government funding due to its high maintenance and operational expenses in a cold, deserted mountain valley. In order to secure additional funds, it is crucial to establish connections with individuals and organizations that strongly believe in the transformative power of education in the world. In a land as ancient as Tethys, where time moves slowly and a native civilization thrives, the question arises, what kind of education is necessary? Should it be modern, enabling the children of this valley to venture beyond their villages with the tools of the modern age? Or should it be cultural, ensuring that those who wish to remain in their villages, surrounded by family and society, stay connected to their roots and inherit the wisdom of their ancestors? Regardless of the circumstances, there exist individuals in the valley who have discerned the utmost significance of fostering equilibrium within the education system of Spiti. They are the monks, teachers, locals, volunteers and people across the world who understand the importance of maintaining a balance in the education system. They aim to provide the young minds of Spiti with a conscious choice. A choice to decide their own destinies.